Dear students, welcome back. Now you have to open your science book page number 192. First of all, I'm going to discuss activity number 14.4. Okay, what is an activity? Collect information from newspapers or weather report on television about rainfall pattern across the country. Also find out how to construct a rain gauge and make one. What precautions are necessary in order to get reliable data from the rain gauge. Now answer the following questions. Means you have to collect the information regarding rainfall from the newspaper and from the book. You may collect information from internet also. Okay, now here are some questions. First of all, we will discuss about those questions. Okay, activity number 14.4. First is our rainfall. First question is, in which month did your city, town, village get the maximum rainfall? Okay, rainfall pattern across India. Rainfall arises only for about 3 to 4 months and is uneven, variable and unpredictable in nature. Rainy season in India ranges from June to mid-September. Means this one is our rainy season in the India from June to mid of the September. Okay, how to construct rain gauze? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ construct ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ rain gauze? Cut the topmost of the bottle. Put some stones in the foot of the bottle. First of all, we have to cut the bottle mouth. Okay, after that we have to keep some stones in the bottle. Okay, use a ruler and pointer pen to make a gauze on the bottle. फिर आप के ruler means scale and pointer pen लेना, उन्हें mark लगाना है. Pour water into bottle until it spread the bottle band on the scale. Okay, and आप water उधे विच pour करना वा. Put your rain gauze separate where it can gather water when it start raining. फिर raining तो ठीक आ जो रेन होंदी आ उस टाइम आप रेन गॉज ये पाना है एंड देखना वा कि कदों जी रेन जी होई एंड कितना वाटर ये कलैक्ट होया. प्रिकॉशनस टू बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग आवर रेन गॉज लगाने के टाइम आपू प्रिकॉशनस यूज़ करनिया चाहिए. डू नॉट प्लेस आर रेन गॉज अंडर ट्री और रूट टू इवेट एक्सट्रा कलैक्शन ऑफ वाटर. मीनस आप रेन गॉज अंडर ट्री किते नहीं रखना, फिर ट्री दियाँ बूंदा वगैरह विच नहीं पैनिया चाहिए. सिर्फ रेन वाटर ही आना चाहिए डायरैक्टली फ्रॉम स्काई. प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी ऑब्सटैकल. तो कोई ऑब्सटैकल जी कोई भी उन्होंने बाहरों कोई मतलब कि कोई हार्म नहीं उन्होंने पहुँचना चाहिए. In which weather month did your city, town, village get the maximum rainfall? Now you have to answer this question as per your city or town. In the July month, okay, with most rainfall in Amritsar. In which month did your state, union, territory get the maximum rainfall? Okay, in which month did your state? Now we are talking about state or union territory. Over the last 4 years, in the Punjab has ranged from June 24 to July 3rd got the maximum rainfall. Means 4 सालों तो पंजाब दे विच की हो रहा है कि 24 जून तो रेनफॉल जी स्टार्ट हो रही है 3rd of July तक, तो मैक्सिमम रेनफॉल इस टाइम दे विच हो रही है. ओके, is rain always accompanied by the thunder and lightning? If not, in which season do you get more of the thunder and lightning with the rain? Means ਕਿਹੜੇ rain ਦੇ ਨਾਲ and ਕਿਹੜੇ season ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ rain ਦੇ ਨਾਲ? Rain is not necessarily accompanied by thunder. In the summer season, rain is accompanied by the thunder. ਕਿਹੜੇ season ਦੇ ਵਿੱਚ? Summer season ਦੇ ਵਿੱਚ, not in the winter season. Okay, now we will talk about the activity number 14.5. First of all, we will see from the book what is an activity. Find out more about monsoons and cyclones from the library. Try and find out the rainfall pattern of any other country. Is the monsoon responsible for rain the world over? First of all, you have to find out about the monsoon and cyclone. Okay, after you have to compare the pattern of two countries. Okay, first of all, monsoon and cyclone. A monsoon, what is a monsoon? A monsoon refers to a seasonal reversal of wind direction by corresponding changes in precipitation, but in
नाउ यूज टू डिस्क्राइब सीजनल चेंजिस इन एटमोसफेरिक सर्कुलेशन। मॉनसून काहदे वास्ते आपां वर्ड यूज़ करते हैं जदों जिहड़ा मींह दा डायरैक्शनस हवा दियां डायरैक्शनस जिहड़ियां वा उन्हां दा चेंज होना एंड सीजनस का चेंज होना उन्होंने आप बोलते हैं मॉनसून। अ साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अ स्ट्रोंग सेंटर ऑफ द लो एटमोसफेरिक प्रैशर। एंड साइक्लोन की होंगे, साइक्लोन वो होंगे जो बहुत घट टैंपरेचर दे बहुत घट प्रैशर से जी एयर आ वो जी रोटेट करती है अराउंड सेंटर। ओके, रेनफॉल पैटर्न ऑफ यूके। साउथ वेस्ट माइल्ड एंड वेरी वेट विंटर्स, वार्म एंड वेट समर्स। एंड नॉर्थ वेस्ट mild winter, okay, mild means medium, cool summer and heavy rainfall all year. Northwest pattern of UK. We are talking about England. Okay, northeast cold winter, cool summer and steady rain all year. We are talking about the directions. Okay, is the monsoon responsible for rain in the world over? Yes, monsoons are seasonal winds that bring moist air from oceans and seas over the land. Means monsoon responsible are rain ਦੇ ਲਈ world ਦੇ ਵਿੱਚ because monsoons ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ wind ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ moist air ਨਮੀ ਵਾਲੀ air ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ land ਵੱਲ। The wind area in the reverse direction of the flow from the non monsoon season and generate precipitation or rains। ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि मॉनसून सीजन जिथे विंड एरिया है विंड वाली डायरैक्शन जी उधर ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ जिधर मॉनसून नहीं हो रहा दैन उत्थे रेन ਹੁੰਦੀ ਆ। इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मॉनसून सीजनस अकर ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी नंबर 14.6। ओके, what is an activity? Organism called lichens are found to be very sensitive to the level of contaminant like sulfur dioxide in the air. As discussed earlier in section, lichens can be commonly found growing on the barks of the tree as a thin greenish white crust। lichens की ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ फाइंड लाइकन ग्रोइंग ऑन द ट्री इन योर लोकैलिटी। एंड तुसी लाइकन फाइंड कर सकते अपनी लोकैलिटी दे विच भी अगर तुहानूं लभदे आ लाइकन कित्थे लगदे आ ट्री दे नाल बाक ऑफ द ट्री दे नाल। एंड ये वाइट एंड ग्रीनिश कलर दा एक जिवें आपां कह सकदे फंगी टाइप दा एक हुंदा वा। ठीक आ। नाउ कंपेयर द लाइकन ऑन द ट्री नियर busy road and trees some distance away। The lichens on the tree near busy road are less in number as the trees some distance away from the road। ਜਿਹੜੇ trees road ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ lichens ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ज़्यादा lichens होंगे। On the tree near road, compare the incidence of lichen on the side facing the road and on the side away from the road। ਹੁਣ ਕੀ ਆ when vehicles की reason की आ when vehicles pass through the roads they release some air pollutants such as nitrogen compound and sulfur dioxide which are air pollutants that killing lichens। क्यों घट होंगे आ ट्रीज ਜਿਹੜੇ रोड ਦੇ लागे उत्थे लाइकन्स क्यों घट होंगे आ क्योंकि वो कोई नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾइकन्स ਨੂੰ किल कर ਦਿੰਦੀਆਂ है। लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर pollutants if the tree near roads a larger amount of air pollutants that's why lichen cannot grow in this condition। On the other hand, if the tree far away from the road of influence of air pollutant on lichen will be smaller so the distortion of the lichen will be larger as a result longer the distance from the road lesser influence of air pollutant on the lichen than the more suitable environment for growth of lichens। lichens the more suitable environment किया कि then when the trees away from the roads because on near the roads we know that air pollutants sulfur dioxide and nitrogen like particles are there and that kill to the lichens। that's why lichens are more in number away from the roads tree as compared to near the roads। okay, I hope you all are understood about these activities। okay, next time we will discuss about the air pollution in detail। thank you। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।